हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त अवनीश मिश्रा। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी फिनालिस्ट के एक नए एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कंटिन्यूसली अभी व्हाट्सएप के लिए वीडियोस बना रहा हूं कि आपको अपने नंबर को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे लेस स्पैमिंग कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊं, तो ऑब्वियसली मैं इंग्लिश में वीडियो बना सकता हूं और बनाऊंगा भी। बट मैं इंडियन हूँ तो पंच लाइन और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हिंदी में आती है। बट स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश। ओके, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में बताऊँ। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू यूज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। देखो, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों इस वीडियो में यूज़ करूँगा। अगर मुझे लगेगा कुछ चीज़ें ऐसी मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे इंग्लिश मुझे बोलनी चाहिए और आप लोगों को समझ में आ जाए, तो मैं हिंदी और मैं बोलूँगा, बट मैं उसी चीज़ को रिपीट भी कर दूँगा इंग्लिश में आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा जो कि शायद इम्पोर्टेंट है, तो एक बार देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों को आप में से लगता है कि व्हाट्सएप जो है इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है कि ये वाजीपर से हम लोग बहुत सारे मैसेजेस भेज सकें। तो हम लोगों ने 22,750 मैसेजेस भेजे हुए हैं सिस्टम से ऑलरेडी। अभी 289 पेंडिंग है और एक मैसेज फेल हुआ है किसी भी रीजन से। एस्टिमेटेड टाइम अभी इतना बचा हुआ है मैसेज डिलीवर होने में, ये 13/4/2023 6:45 AM। और अभी आप देख सकते हो अगर, तो मेरी वॉच में टाइम हो रहा है अराउंड 7 AM हो रहा है। तो हाफ एन आवर पहले का ये स्क्रीनशॉट है। ये मोबाइल नंबर है, आप इस पर भी मैसेज करोगे तो मैं लाइव रहूँगा, मतलब मैं आपको रियल टाइम आंसर करूँगा या मेरा चैट बॉट आंसर करेगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग, अराउंड 30 लोगों को अभी हमने ग्रुप में, मतलब बेसिकली मेरा जो ग्रुप है ना, बेसिकली जूम का फ्री वर्जन है, तो उसमें 30 मतलब एट अ टाइम मैं लाइव ले सकता हूँ लोगों को। तो अभी प्रेजेंट में, हाँ, 30 के 30 ऑलरेडी सीट्स फुल हैं। तो मैं ये रिकॉर्डेड सेशन, बेसिकली मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे होगे तो रिकॉर्डेड सेशन ही होगा। बट स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और डेफिनेटली मैं आंसर करूँगा। बट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी कम्युनिटी को आप एक बार ज्वाइन कर लें। लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कम्युनिटी का लिंक दे दूँगा, तो एक बार आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं वापस से। और माफ़ी चाहता हूँ, एक्चुअल में मुझे हुआ है जुकाम, तो बीच बीच में थोड़ी सी ऐसी आवाज़ आपको आती रहेंगी। ओके, एक्चुअली आई एम फीलिंग cold, so avoid any kind of unwanted noise. Okay, so let's start. आज हम समझेंगे सबसे पहले व्हाट्सएप का एंटी स्पैम बेसिकली वर्क कैसे करता है। टुडे वी विल गोइंग टू लर्न हाउ एंटी स्पैमिंग ऑफ व्हाट्सएप वर्क। Nowadays WhatsApp is that much smart, or WhatsApp anti-spam automation is that much strong that he will easily sense either you are using spam content or something with their automated system. ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है कि देखो, व्हाट्सएप, आप एक इंडिविजुअल हो या आप टीम हो, आप इतना दिमाग लगाते हो कि भाई मैं ऐसे करूँगा तो स्पैमिंग कर सकता हूँ, या ऐसे मुझे लीड जनरेट करनी है, या मैं कंटेंट में एक रैंडम टैग लगा देता हूँ, इससे बैन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो मैंने सेंस करी है मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है। Many of you are thinking that inserting some random tag or something, it will help you to avoid banning of your WhatsApp account. So it's totally rubbish or a bad idea. Okay, I will
try to teach you how to avoid the ban in WhatsApp, but this is not 100% remedy. It somehow will prevent you for the unwanted blockage. As you can see here, we have sent 22,750 SMSs with a single account, but we have used the 1500 IP VPN layered or onion routing using node. This is very important. Actually, many of you are thinking that you can use the VPN on advanced proxy management system or manager, and it will prevent you from the blockage. No, it will not prevent you from the blockage. It will just basically advanced proxy system is work on front end layer on your message submission, or you currently from where you are submitting the messages, that IP will not exposed, but while submitting the messaging it will use the node version, and we have integrated 1500 IP sets with the node. So if we will calculate, for example, I have sent it 22,500, let me suppose, and it's 1500. So every one IP will send 15 SMS only. So and it will not like that 15 messages it will send, then again from 16th message it will say second IP. No, it will use in rotation. First 1500 message will send with the unique IP addresses, then from 1500 first messages it will again use the second first IP. So it will use in the rotation manner. So it will on WhatsApp system it will show some unique IP, so might be possible that their system will not able to detect either this spam IP or spam, something is spam or something is fishy going on. But this is not 100%, might be it's depend on the IP also. And I will show you how to write the content. See, this is the content which we have written for our workshop messages, and as you can see here, hi, hello. Actually we use the synonyms of the words. You have to just google out synonym generator or synonyms of hello, and it will give you the some synonyms: salute, greeting, welcome, salutations, regards, respect, whatever. Okay, so we will copy, we will use the curly bracket here and here, and in between you can use the break symbol, and you can write all your words over there. Similar words like hello, hey, greetings, good day, हाय देयर, नमस्ते, गुड डे. तो हम ऐसे ब्रैकेट्स के बीच में ये सारी चीज़ें लिखेंगे, और ये रैंडमली जैसे फर्स्ट वर्ड लेगा और इसके बाद यहाँ से भी फर्स्ट लेगा, 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 यहाँ से सेकंड टाइम पे यहाँ से फर्स्ट लेगा, यहाँ से सेकंड लेगा, यहाँ से फर्स्ट लेगा. रैंडम मतलब ये मिक्स ऐसे करेगा ना सारे मैसेजेस को कि कम्प्लीटली यूनिक मैसेजेस लगेंगे. अब इस 2020 अराउंड 23,000, लेट मी सपोज we have sent it approximately 23,000, but we can guarantee you each SMS is almost unique. You can see we have used approximately that much line for a single line, for writing a single line in the WhatsApp. It's about workshop timing and all. For second line we have used this much line. For third, fourth, as you can see here. Okay, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, एक एक लाइन लिखने के लिए भी हम लोगों ने इतनी सारी लाइंस का यूज किया हुआ है.
इसके अलावा जो आईपी है ना, ये हम लोगों ने नोड में इंटीग्रेट कर रखा है। नोड में इंटीग्रेट बेसिकली आप वाले में नहीं हो पाएगा, उसको हमें अलग से इंटीग्रेट करना पड़ता है। आप तो सिंपल वाजिपर का एक नॉर्मल वर्जन यूज कर रहे होगे, और नॉर्मल में पॉसिबल नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप वाले में सफारी लिख के आता है, ये रहा। आप वाले में सफारी लिख के आता है, हम लोगों में ये क्रोम, इवन क्रोम, और सम टाइम हम लोग यहाँ पे कोई ब्राउज़र ही यूज़ नहीं करते हैं, तो ये कुछ भी नहीं लिख के आएगा। अभी के लिए क्रोम ये आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ब्राउज़र को भी कस्टमाइज़ कर रखा है 1500 आईपी सेट में। और ये जैसे आपका मैसेज सूट आउट होता है, तो जो नोड पे जहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट होती है, वहीं पे आईपी चेंज होके मैसेजेस सबमिट होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि स्पैम के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और ऑनियन लेयरिंग होती है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी आईपी कभी एक्सपोज नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्पैम को अवॉइड कर सकें। इस तरीके मैंने आपको बता दिया कंटेंट कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी कंटेंट है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप फॉर एग्जांपल जैसे 20,000 मैसेजेस आपको भेजने हैं, आपके पास आईपी नहीं भी है, if you want to send 20,000 messages and you don't have that IP VPN system or something, then also you can send. Just divide the number of messages by 10. For example, you will get the value approximately 2000. Make the 2010 groups, and use the unique messages in each group. It's not like that you are sending the same SMS in all the 10 groups. No, uh, always rewrite the content, just because sometime WhatsApp system already detected that this is the pattern of the messages and the user is sending, so this they will add it to their anti-spamming system, and this may be result in banning of your WhatsApp number. So better to rewrite the campaign for each SMS. Do not try to send same content in all the groups, always try to rewrite. And nowadays you have lot of options. We use quill bolt. It will change the meaning of the messages, but it will not wait, it will not rewrite. I think no, it will rewrite the content, but meaning will not change. For example, hello, hold on, it shows your account. I think session is expired. We have buy the premium version of Quill Bolt. How is treating you? How is life treating you? It's just change the word, but meaning is same. So you can use this kind of application. It will also help you to avoid the spam. Okay, you can use the synonyms for the same words to rotate, and also you can use the quill wall to rewrite the content, so that the system will not deduct whatever you want to send. ऐसा करने से मोस्ट प्रॉब्ली आपको स्पैमिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आप अपने नंबर को भी सेव कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप वॉजिपर का सिस्टम यूज कर रहे हो और आपको किसी भी एड ऑन की ज़रूरत है, जैसे कि WHMCS, वर्ड प्रेस, वो कॉमर्स, एंड आप लर्न करना चाहते हैं कार्ड एबडॉनमेंट फीचर को, तो भी हम आप लोगों को ये चीज़ सिखाएंगे। और ये सारी इफ़ यू आर यूजिंग द वॉजिपर API version and you want to integrate it with the WHMCS or WordPress or WooCommerce, then plugins are available with us. You can either buy the plugins for your own domain, or if you have all that system is already with you, uh, then you can use our add-ons, or you can request us to make custom application or add-ons for us, for you. This is the system. And one more update we have: currently buttons are not working, and many of you are texting me for the button update. I have already and clearly told you that if we will get the update, we will surely going to give you. We don't have any intention like that we will charge for it or something like that. ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। अगर बटन का कोई भी अपडेट आएगा तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ जैसे ही आएगा, और अगर वो बटन स्टेबल हुआ तो मैं आपको दूंगा। बट रोज़ रोज़ आप टेक्स्ट करोगे बटन का अपडेट क्या हुआ है, एक राउंड फिगर आइडिया दे दो अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा, तो मैं सिंपली आपके मैसेजेस को इग्नोर करना स्टार्ट कर दूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सेम चीज़ें आपको 50 बार लिख के दूँ। अगर आपका कस्टमर आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है तो भाई उससे बोलो कि आप ऑफिशियल API जाके यूज़ कर लो, ठीक है। मैं आपको उसी चीज़ को बार बार आंसर नहीं कर सकता, ना ही व्हाट्सअप मेरे घर का है कि नहीं मैं आपको बना के दे दूंगा या आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा। आपका कस्टमर, अगर आप अपने कस्टमर को नहीं समझा पा रहे हो तो देखो ये आपका कॉल है। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ कि जब भी अपडेट आएगा तभी मैं दे पाऊंगा, ऐसा आपके मैसेज करने से मैं नहीं दे पाऊंगा। बहुत क्लियर चीज़ है ये। Many of you are smsing regarding the WhatsApp button, so I want to say if we will get the update, we will surely give you the update. But if you are thinking that it's getting late, you can buy the official API with the Meta, and you can pay approximately 49 paisa to them in INR, or approximately 0.05 in USD. This is the official fee for the per conversation charge, which is valid for the 24 hours per session. And please do not message unnecessary regarding the button updates. If you are going to do this, then surely I am going to ignore your messages, just because I have already answered that if we will get the updates, we will surely going to give it to you. But do not message that our clients are getting irritated, please share the update. We are not responsible for your clients, we are responsible only to you. Okay, and come back to the class. These are the list of the modules which we are going to share with you. That's it. uh, that's it for the anti-ban workshop. On the next class we are going to learn how to integrate uh, Waziper or WhatsApp with your Google Sheets. If you are going to update something in your Google Sheet, then it will surely going to text messages to your client or to your group, whatever wherever you want to set. So in the next lecture we are going to learn this. Till that, you can subscribe to our community and like this video, and subscribe to my YouTube channel, and surely we are going to rock together. Thank you. Have a great day.